मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज जो कि इस्तेमाल होती रही हैं डोम्स बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा रिवायती मटेरियल्स और टेक्निक्स को हम देखेंगे, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत वेरिएशन और मुख्तलिफ तरीक़ों से डोम्स बनते रहे हैं दुनिया में, जो मुख्तलिफ जगहों पे। और उसमें जो जो मुख्तलिफ शक्लें के डोम्स बनते हैं, तो उसमें बुनियादी तौर पे वजह उसकी ये है कि जो मुख्तलिफ मुकामी मटेरियल्स दरकार होते हैं। सो स्टोन हो, ब्रिक हो, एडोबे, सन ड्राइड अर्थ, और जैसे पहले भी मैंने कहा कि कंक्रीट भी, लाइम क्रीट। और फिर ये कि यहाँ मटेरियल्स का जिक्र होगा, तो ये भी ख्याल रखें कि मुकामी तौर पे कौन से मटेरियल्स आपको अवेलेबल हैं मसाले के लिए, मोटर। तो इस तरह से फिर कुछ ये सैम्पल एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अम, को बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा, इधर से चलें। ओके। अच्छा, तो अ, अब स्टोन अगर ले लें तो स्टोन के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजीज कौन सी अवेलेबल हैं, और ऑल्सो ऑफ कोर्स मोटर अवेलेबल है कि नहीं है। तो मसलन ये जो टॉप राइट पे मिसाल के तौर पे बताया है कि ये बहुत से मुकामी पुराने रिवायतों में इस तरह के पत्थरों से पत्थर किस साइज के अवेलेबल हैं, और अगर मोटर नहीं भी अवेलेबल तो ड्राई कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और उसमें भी कॉर्बलिंग करके भी ज़्यादा आसानी से हो जाता है, तो वो उसकी पूरी प्रोफाइल उससे निकलती है। ये तो बहुत से लेट से सिंपल और रूरल सोसाइटीज में इस तरह की ट्रेडिशंस मौजूद हैं, यूरोप में भी और एशिया में भी, अफ्रीका में भी, इवन अमेरिकाज में भी। तो लेकिन जहाँ पे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, एनालिसिस, जियोमेट्री वगैरह, और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टोन अवेलेबल, अगर बड़े ब्लॉक्स में अवेलेबल है तो इसको इस तरह से तराश के, अगर पूरी दीवार मेसनरी की है तो उसके जो कोर्सेज आ रहे हैं उन्हीं को फिर इंटरलॉक करके जो आर्च के वूजो आर्च हैं और दीवार के जो रद्दे हैं, स्टोन्स को इस तरह से कट और शेप किया जाता है। तो जहाँ ये ज्यादा केयरफुली कट एंड जिसे कहते हैं ड्रेस्ड पत्थर इस्तेमाल किए जाएं, तो ये एशलर भी कहलाती है मेसनरी, या ड्रेस्ड स्टोन। अब ड्रेस्ड स्टोन में भी एक दफा अगर आप यानी उस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करें तो उसमें फिर बेहद और बहुत सारे स्कोप होता है डेकोरेटिव कार्विंग्स उसमें इंट्रोड्यूस करना, स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी शक्ल में, और जो नॉन स्ट्रक्चरल स्टोन एलिमेंट्स दीवारें वगैरह उसमें भी। सो इट्स अ लॉट ऑफ वेरी डिफरेंट लैंग्वेजेस इवॉल्व आउट ऑफ
the kind of material available. Yeah, again, just to show the difference between dressed stone ashlar masonry on the right, इस डोम में you can see बड़े बड़े साइज पत्थर के शेप करके वेज शेप में all of these it's in this dressed ashlar stone masonry में. लेकिन बहुत से ट्रेडिशंस में जहाँ रैंडम रबल मेसनरी भी कहलाती है, और एक इन बिटवीन इसका एक एग्जाम्पल हमारे गंधारा आर्किटेक्चर में भी काफी मिलता है. इनफैक्ट इट बिकम्स विद लाइम एंड वेरियस साइजेस एंड शेप्स undressed small stones, वो बिल्कुल एक कंक्रीट, सो दिस लाइम कंक्रीट के भी बहुत सी मिसालें हैं. एंड देन ऑफ कोर्स दैट मींस के उसके ये तो इस देख रहे हैं कि ड्रेस्ड स्टोन करेंगे तो उसे बहुत रिफाइनमेंट, सोफिस्टिकेशन, फाइन डिटेल्स, वेरी फाइन, ये बहुत ही. और यूरोपियन गॉथिक में बहुत सारे the Gothic in Europe evolved a very rich and powerful architecture. और जैसे मेरे ख्याल से पिछली बार मैंने जिक्र किया था कि वो जो स्टीलिंग फ्रॉम द सैरसन्स किताब हाल में आई है सामने, और उन्होंने साबित किया है कि ये यूरोपियन गॉथिक जो कि वाकई बहुत काबिल तारीफ और उम्दा एक स्टाइल और पीरियड रहा है यूरोप में, लेकिन उसकी भी हर एक छोटी से बड़ी, छोटी से लेकर बड़ी सारी डिटेल्स, I forget the name, she has been a very fine author. हिस्ट्री को देखते, एविडेंस को देख के ऑन ग्राउंड एक एक डिटेल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ वो मिडिल ईस्ट से यूरोप में किस तरह से और कौन सी एलिमेंट्स किस बिल्डिंग से किस पीरियड में वो इस्तेमाल में आना शुरू, यूरोप में उसका इंट्रोडक्शन हुआ. But that's an interesting story in itself. ये as I said, ये यूरोपियन गॉथिक एग्जाम्पल में वेरी फाइन ड्रेस्ड स्टोन मेसनरी, वही रिब्स हैं, उसकी कई शक्लें होती हैं, और बीच में जो बड़े बड़े पीसेस स्टोन के वो भी शेप्स देके, एंड देन इन दीज रोज विंडोज आप देख रहे हैं कि वो भी स्टोन वेरी फाइन कार्व्ड, और इट प्रोड्यूसेस अ मच मोर फिनिश्ड, और इससे जरा बड़े स्पैन्स भी मुमकिन हो जाते हैं जब प्रिसाइज engineered और shaped जब stones आप कर रहे हैं. ये top right पे is an example also of sun-dried earth adobe. पिछले बार किसी ने पूछा था कि ये conical shape क्यों होते हैं, मैंने बताया कि there is no reason why it can't be also spherical. और I think this is in Africa. ये हमारे अपनी तख्त बाई की साइट पे you see that kind of lime concrete, yes, textile masonry भी कहलाती है, diaper masonry. इसमें combination of random rough small stones with used like concrete, but then also when it comes to the dome part, तो वो प्रॉपर लेयर्स में रद्दों में लगा के डोम्स की भी शक्ल बन जाती है. So the practical problems and how they've been solved in different situations, different locations,
different regions at different times. And it is almost limitless, from obvious center, एक स्टैंड बना के और एक पोल, so that you have, जिधर भी उसको घुमाएंगे तो वो स्फीयर का ही आपको सरफेस ऑटोमेटिकली देगा. सो इस तरह यू कैन यूज दैट वन फिक्स्ड सेंटर एंड टेक, रद्दे जो है बिल्कुल सही सर्कल, और द रिजल्ट विल बी अ प्रॉपर स्फीयर. लेकिन ये उसके नीचे जो है, इसमें ए काइंड ऑफ पैराबोलिक और कैटेनरी शेप्ड वॉल्ट. वॉल्ट में जैसे कहा था, आपको बताया कि वो आर्च को अगर एक एक्सिस पे मूव करें तो ये वॉल्ट की शक्ल बन जाती है. और इसमें बगैर बगैर शटरिंग के किस तरह से वॉल्ट बनता है, इसकी बहुत सी रिवायात हैं. ईरान में खासकर इसको बहुत सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, और बड़े खूबसूरत और प्रैक्टिक. और अभी तक ईरान में एक्चुअली मल्टी स्टोरी प्लाजास मैंने खुद देखे. स्टील बेसिक फ्रेम और स्टील के गर्डर्स से स्पैन करके, फिर उनके गर्डर्स के बीच में शैलो डोम्स, वेरी सिमिलर मेथड, कि वो इंक्लाइंड, द आर्चेस आर इंक्लाइंड, तो वो एक दूसरे पे रेस्ट करते हैं. सो इट्स इजियर, द ब्रिक्स डोंट फॉल डाउन. ऐसे करेंगे तो एक वो जब तक कि दोनों तरफ से पकड़ा नहीं जाएगा तो वो ब्रिक्स गिर सकते हैं. एंड बाय इंक्लाइनिंग द आर्च you get a technique of very fast, very easy and very practical way of making. इसमें उसकी शक्ल को सही रखने के लिए some simple device of, यानी दोनों एंड्स पे, दीवारों पे वो उसका शेप बना के, और फिर between the two walls you stretch out guidelines. ये इसमें बारीक सफेद लाइनें दिख रही हैं, and then you just follow. Otherwise it's very difficult. ये spherical dome तो बड़े आसानी से, with a center and in all three directions, to get a sphere. But how do you ensure that you get a proper parabola or an oval or a catenary? तो उसके लिए दीवार पे उसकी स्टेंसिल बना के opposite walls पे, and you can stretch lines, and that gives you a guideline to follow. And this is an interesting picture I included because इसमें मुझे अपना domes बनाने का, I think it was the first time that I managed to make a dome about this size. It was just about 2 meters across in diameter and on the floor. So it's very much like this on a site which was under construction. तो क्लाइंट से इजाजत ली कि अगर वो इजाजत दें तो हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल ये डोम बनाने का. ही वाज वेरी कीन, उसने जरूर बनाए. तो वी डिड दिस, और इसी तरह से पूरा दिन लगा एक मजदूर को, और उसने वो डोम बना लिया. The reason why I put this, and it reminds me of that episode, वो जब शाम हुई, काम खत्म हो गया, तो उसने कहा लो जी डोम तो बन गया, तो मैंने खड़ो है तो किस तरह निकटांगा मैं. So he was actually like this person in the way, loud you get out. So he had to be lifted up and so on. But that's how we learned for the first time to have some experience. फिर every new occasion फिर उस पे हम सीखते गए, failures भी हुए, problem solving a lot. We had to work with the craftsmen.
कुछ उनके बहुत मुफीद suggestions. So we developed our own experience, जिसपे अब हम काफी बड़े बड़े domes बना चुके हैं. Chale Sharif is probably the largest, the mosque, central dome in Chale Sharif. It's about more than 30 or 32 feet in diameter. ये एक और सेंट्रल एशियन, आई थिंक अर्दिस्तान मस्जिद का एग्जाम्पल है. Central Asia, Iran, especially has a very rich tradition using bricks, lime, and then these kind of four-centered arches to make these domes. इसमें ये आप देख रहे हैं double helix. There's a like a basket weave, two helixes. Now this is both a structural utility, a reason for using this is both structural, but it also ends up with making a very beautiful aesthetic pattern on the brickwork. और यही फिर बेसिक जो बास्केट ऑफ डबल स्पाइरल जाता हुआ इसकी हमारे यहाँ काफी इस्तेमाल होता है, वो गालिब कारी कहलाती है. एंड यू कैन सी वेयर दीज ट्रेडिशंस आर कमिंग फ्रॉम. ये तो सेंट्रल एशिया और ईरान के ब्रिक dome making के हैं, but I suspect that there's a lot that can be traced back to the Mongol, Central Asian, Turkmenistan, वहाँ के nomadic जो कबाइल होते थे, चंगेज खान वगैरह, तो वो अपने बिल्डिंग्स को अपने साथ लेके चलते थे. They had to be very light. So light out of flexible wood, bent, making this kind of a little like a basket. फिर उसके ऊपर animal skins would be stretched to make the covering. And I think a lot of ये जो form work बनाने का तरीका और उसमें से जो it must connect with that tradition of making a yurt. It's called a yurt. ये आप देख रहे हैं किसी स्टडी में किसी स्कॉलर ने एनालाइजिंग, आई थिंक ब्रूनेलेस्कीज फ्लोरेंस का जो डोम था, तो उसमें यूरोप में पहली बार ये टेक्निक इस्तेमाल की गई और उसकी वजह थी टू काउंटर द टेंसाइल हूप स्ट्रेसेस जो डोम में डेवलप होते हैं, स्पेशली इन द लोअर पार्ट्स. तो उसको एक तरीका जो ब्रूनेलेस्की ने इस्तेमाल किया, वेरी सक्सेसफुल, वाज बाय चेंजिंग जो रद्दे इस तरह चल रहे हैं, एंड देन आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स यू टर्न इट अप, सो एंड देन यू गो अगेन. तो ये जस्ट बाय a certain rhythm or frequency, when you turn the axis of the block, the tile, you get these zigzag shapes, and it adds up. When on the sphere, then as it goes up, it makes these two interlocking double helix. ये आप देख रहे हैं, that's another simpler version of zigzag courses. और ये हाँ, इसमें आपको वो helix बनता हुआ नजर आ रहा है, how it goes around. So from very sophisticated solutions and with or very simple primitive traditions going back to the rural pre-urban times,
with corbelling, and but even also a double shell with an infill. ये भी है, और these principles are found right through, even in the more developed forms. Brunelleschi also used that method of making the weight of the dome much lighter by breaking it up into two shells. और ये हमारे यहाँ भी काफी आम है. निचले जो डोम होता है, और as I explained also I think earlier, that there's another reason for that double dome. कि अगर आप उसकी monumental जो क्वालिटी है कि दूर से नजर आ जाए एज ए लैंडमार्क, तो आपको हाइट बढ़ाना पड़ती है, लेकिन अंदर से इतनी ज्यादा हाइट वो बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है. सो यू इंट्रोड्यूस लोअर डोम, जिसको हम छतरी कहते हैं. सो बोथ स्ट्रक्चरली एंड एस्थेटिकली ये आप देखेंगे बार बार कि इन सब चीजों में यहाँ मसलन जो कट स्टोन में, to get the kind of breaking the joints, interlocking between the blocks, you get also very beautiful patterns, an aesthetic, but also a practical, structural, and constructional advantage. In this case, ये तो लकड़ी का फॉर्मवर्क बना के आर्च बना लिया है. And again, now all over the world, there are many research institutions which are doing amazing work in analyzing material science and engineering, dynamics. Computers also बहुत, that's revolutionized the way we can analyze the structures. और so India में कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे रिसर्च भी होता है, नए नए फॉर्म्स भी डेवलप हो रहे हैं, यूरोप में भी हैं. सो ये काम आपको इस वक्त सारी दुनिया में मिलेगा. This again reminds me very much of the initial जो हम लोगों ने भी without shuttering जब बनाना शुरू किए, we had to work with the craftsmen. उन्होंने भी यहाँ बनते रहे, लेकिन वो ट्रेडिशन खत्म हो चुका था. अच्छा, डोम्स का एक हाँ, कंस्ट्रक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द, ये तो वो आ गया इसमें. ओके, domes and solar radiation. It's an interesting aspect of domes कि वो spherical surface जो होती है उसमें सूरज किसी भी रुख से पड़ रहा हो, तो जहाँ flat surface में all parts of that surface is absorbing that radiation. लेकिन spherical surface पे, dome पे, जहाँ एक जो डायरेक्शन है उस तरफ तो मैक्सिमम वो रेडिएशन पड़ता है, लेकिन एज यू मूव आउट तो वो फिर लेस एंड लेस, और फिर देयर इज ऑलवेज सम पार्ट which is practically no solar radiation falling on it. And this is shown in this a very nice diagram where the hot and cold colors from yellow through orange, red, and then blue cold. They show how this is changes throughout the day with the movement of the sun. Now, as I said, a lot of these traditions go back. Europe में
गॉथिक से पहले जो आर्चेस और डोम्स और वॉल्स को बहुत डेवलप किया और बहुत इस्तेमाल किया, वो था रोमन पीरियड में। तो रोमनेस्क तो खैर बाद में, लेकिन एक्चुअल जो इंपीरियल रोम के ज़माने में, इटली में, बट द रोमन टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ जहाँ, वास्ट एम्पायर ऑफ कोर्स, द लार्जेस्ट इन इट्स टाइम, तो वो जगह जगह भी इस्तेमाल हुए। सबसे बड़ा जो रोमन टाइम्स का स्टोन मेसनरी में डोम है, ये है पैंथियन। आप देख सकते हैं जो बॉटम राइट की तस्वीर है, इससे आपको अंदाजा होगा कि इसकी साइज क्या है। आई फॉरगेट द एग्जैक्ट साइज बट इट इज ह्यूज। तो इस पे भी अ, बहुत सी कंट्रोवर्सी रही है कि ये बनाया कैसे, हाउ डू मेक द फॉर्म वर्क फॉर सच अ बिग डोम। तो अ, ये मॉडर्न स्कॉलर्स ने भी इस पे काफी एनालिसिस किया है, कुछ पुरानी एविडेंसेस भी देखे हैं और रिकंस्ट्रक्ट किया है कि किस किस तरह से वो लिफ्टिंग डिवाइसेस, स्कैफोल्डिंग, शटरिंग, फॉर्मवर्क, ये सब बनाया जाता होगा। दिस इज ये फॉर इंस्टेंस के लिफ्टिंग डिवाइसेस कैसे इधर इधर से काउंटरवेट करके और फिर इधर से आप चीज रखें एंड यू कैन टिल्ट इट अप, इस तरह से ऊपर पहुंचाई जा सकती है। एंड देयर वर अदर पुलीज एंड थिंग्स आल्सो यूज्ड। सो एक कहानी ये भी मशहूर है, स्पेशली टूरिस्ट को ये सुनाई जाती है। जब वो पूछते हैं कि जी कैसे बनाया हो इतना डोम, तो कहते हैं कि इन्होंने मड का डोम बनाया पहले, सॉलिड मड। तो उस पे बड़ी आसानी से वो मेसनरी सारा जब बन गई, तो बीच में ये सुराख इसलिए छोड़ दिया उन्होंने कि मशहूर कर दिया शहर में कि इस माउंड के अंदर बीच में एक खजाना है। तो सारे शहर की आबादी टूट पड़ी उस पे और उन्होंने खोदना शुरू किया। तो बहुत जल्दी वो सारा मट्टी जो है ना, वो एक्सकवेटर के बाहर हो गई और डोम निकल आया। आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली ट्रू, बट इट्स अ नाइस स्टोरी। ये जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ अब इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे, जहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल काम, प्रैक्टिकल टीचिंग वगैरह सब हो रहा है, एक्सप्लोरेशन, हाउ टू मेक domes with efficient geometries and without shuttering if possible. ये एक हाइब्रिड भी है कि आपने ये शटरिंग जैसे स्लैब के लिए करते हैं, ये भी हमने शुरू शुरू में इस्तेमाल की जब पूरी कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक बड़ा डोम ब्रिक्स में इस तरह से डबल स्टोरेज बनाने के लिए ज्यादा उसकी वो भी नहीं हाइट हो सकती थी। To make a very shallow, almost a slab, तो यहाँ कनाल पे एक मन्नान साहब थे, उनके लिए अभी भी है वो, उसमें फिर कंक्रीट की वॉफल स्लैब, यानी बीम्स दोनों डायरेक्शन में, तो एक ग्रिड बन गया स्क्वायर। और फिर उसमें बीच में ब्रिक्स को वेरी मच लाइक दिस पिक्चर ऑन द बॉटम राइट, ब्रिक्स रख के और फिर कंक्रीट पोर की। और ये हमने रोशनी में भी इस्तेमाल किया। रोशनी विलेज एक प्रोजेक्ट है बेदिया रोड पे, तो उसमें भी वी यूज दिस टेक्निक। एंड नाउ एज आई सेड कि स्पेशली एक तो ये कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, उसकी वजह से जगह जगह सारी दुनिया में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ये इंटरेस्ट दोबारा इन स्ट्रक्चर्स और इन मटेरियल्स में
इसलिए हो रहा है कि ये ज्यादा सस्टेनेबल है, इनमें बहुत लो कार्बन फुटप्रिंट होता है. So people are now exploring this, and very developed institutions, universities, research centers. एक तो उसकी जरूरत, स्पेशली अब ज्यादा awareness of climate and the need to use sustainable forms and materials. लेकिन दूसरी बात यह है कि इसी दौर में, इसी जमाने में कंप्यूटर्स की भी डेवलपमेंट हुई. सो कंप्यूटर्स के साथ बहुत सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस मुमकिन हो गई है जो पहले नहीं थी अवेलेबल. सो दे आर एबल टू फाइंड आउट, मैंने आपको बताया जैसे वेरी सिंपल टूल वाज अ चेन, a span, to find out what should be the form of an arch or a dome. You hang a chain and reverse that. That is a very simple form used catenary बनाने के लिए. But now with computer simulation and 3D उसके जो आपके पास algorithms हैं, you can do very, very sophisticated and very fine, precise analysis and designing. So ये आप देख रहे हैं कि thicknesses बिल्कुल shells are down to about inches, on a slightly different kind of shell, which I'm reminded of that by looking at this particularly, and ये bottom, ये left पे है, a similar very thin shell but in reinforced concrete. It's called the hyperbolic paraboloid. तो ये आप वही पैराबोला प्रिंसिपल जो कि चेन का होता है, मगर दो को इंटरलॉक करके, so one is pulling up, the other is pulling down, उस बेसिस पे एक thin shell as a very sophisticated, very thin materials. And one of the pioneers in developing the hyperbolic paraboloid shell structures was a Mexican, Felix Candela. And when I was a student, he came and delivered a talk as a visiting lecturer हमारे स्कूल में. तो वो अपने, आपने भी देखे होंगे images, really very 2, 2.5, 3 inch thick slabs spanning 40 feet, etc. So very impressive, of course. So after the lecture, any questions? So somebody said, excuse me, Mr. Candela, what about the factor of safety? वो कहते हैं, what? The factor of safety, sir? How do you account for that? Huh? What do you mean? Then he had a laugh. I know what you mean. The factor of safety. वो engineering में जब आप design कर लेते हैं, तो you add just in case a precautionary, उसमें extra add कर देते हैं, thickness हो या जो भी आप design कर रहे हैं, because of the unknown things that can happen, earthquakes, wind loads, unexpected asymmetrical loading वगैरह. So वो engineering design में एक बड़ी standard चीज है कि आप करके फिर you always add a factor of safety just in case. So he said, I call that the factor of ignorance, because you don't know what's going to happen, at which point it will actually collapse. So what we do is we build a shell and we load it until it collapses. Then we know precisely at what loading it will collapse, and then we make it a little thicker. So ये तो Felix actually, I think the earliest dome structures जो मैंने इस्तेमाल किए यहाँ पे,
कोट करामत, बल्कि नहीं, एक्चुअली यहाँ हम जहाँ बैठे हैं, हमारा ये घर ऑफिस है, तो नेक्स्ट डोर प्लॉट उस वक्त होता था सैगल्स का, और याया खान के मार्शल लॉ लगा था। तो जैसे हर नई गवर्नमेंट, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग व्हिच हैज अ हाई प्रोफाइल और पीपल दे कैन शो देयर वेरी। तो उन्होंने कहा जी लो इनकम हाउसिंग का प्रोजेक्ट होना चाहिए। उस वक्त सैगल्स की कंस्ट्रक्शन फर्म थी कॉनफोर्स, तो उन्होंने कहा कि जी हम कर देते हैं। और वो मेरे दोस्त भी थे, तो came to me and said कि जी ये करना है लो कॉस्ट, how can we make a low cost? So we naturally the obvious thing was कि भाई आपके पास सबसे लो कॉस्ट मटेरियल्स हैं क्या? Nothing but bricks. So bricks के साथ then the structure obviously has to be arches, vaults and domes. But nobody could calculate these. So the best engineer, very bright engineer, was Hashim Khan. उस वक्त, I'm not sure if he's still alive or not. Hashim Khan was the senior partner of Nayyar Ali Dada. So ये उनकी firm थी. Hashim Khan was the actual principal and Nayyar was a young associate. But Hashim was a very bright engineer who really understood and thought out of the box. अच्छा, उस जमाने में नया नया ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी आ गए थे और प्रोग्रामेबल भी थे. So he was very excited. He was very much into these things. तो ने कहा जी अच्छा ये मैं कर लूंगा, मगर ये बड़ा मुश्किल होता है इसका डिजाइन करना. इसमें बहुत सारे जो अन प्रिसाइसली आप उसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, अननोन टाइप ऑफ चीजें होती हैं और अननोएबल काइंड ऑफ थिंग. तो वो कैसे? So, and it involves very detailed block by block analysis कि कितना लोड एक ब्लॉक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, और फिर उसका एंगल और थिकनेस और इस तरह से शेल की थिकनेस, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस एंड द होल ओवरऑल प्रोफाइल. सो वो हमने कहा हाशिम से कि भाई तुम ये डिजाइन कर दो. तो हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, हम यार कुछ कर रहे थे क्या? कहते मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ. अभी इतने पॉइंट्स कैलकुलेट करना है कंप्यूटर से, अभी मैंने इतने कर दिए हैं, विच इज नॉट इवन हाफ द नंबर ऑफ पॉइंट, बट हो जाएंगे. यार टाइम नहीं है, वो तो जनरल साहब कह रहे हैं जल्दी जल्दी करें. सो इट्स ओके फॉरगेट दिस, ये इस तरह नहीं होगा. किधर आपके पास कुछ जमीन है? सो दिस प्लॉट नेक्स्ट डोर, उस वक्त कुछ भी नहीं था, खाली था. तो लेट्स गो. ये इनकी सैगल्स की प्लॉट थी, सो वी वर एबल टू डू दैट. तो प्लॉट जमीन पे जाके हमने प्रोटोटाइप्स बनाने थे, शुरू भी कर दिए थे दीवारें वगैरह, बट वी डिडंट नो हाउ टू मेक दैट vault roof. So then Hashim Khan had the workers to build on the ground a catenary profile arch or very small section of the vault. फिर वो जब सेट हो गया, so he started loading it with sandbags, not on top, from one side, which is the worst kind of loading because the catenary is designed for uniform distributed load, but you have to test it for the worst conditions. So he started by piling up the sandbags on one side alone. So then suddenly the thing went. And this was with 3-inch thick bricks, a span of 12 feet. And so then he said, now we know kitna load hi le sakte hain.
So ये 3 inches में तो बन गया. We've seen this. So we'll make it 4.5 inches. This is exactly the Felix Cantillon type of method and reasoning of a sensible, hands-on, thinking out of the box engineer. So I'm very much reminded of these thin shells. ये अलग बात है कि फिर this was successful. Then the next project I had was a farmhouse, Zahid Karamat, यहाँ से कुछ 20 मील on Multan Road, Koot Karamat में. So again, it was a friend, so I had full liberty, and I started. And this was, mind you, 1966, 67. So again, the principle reasoning being was, as a modernist rationalist, क्या मटेरियल्स होना चाहिए. मटेरियल है यहाँ पे सिर्फ क्ले, सो ब्रिक्स, और फिर चूना क्या हो, lime. So we made this farmhouse for Zahid Karamat with bricks and lime. और उसमें भी vaults, जो यहाँ हम टेस्ट करके सक्सेसफुली कर चुके थे. That catenary, it is modified catenary which Hashim did, but it was tried and tested. तो वो हमने लगाई, मगर उसमें ये चीज ऐड करी कि जो wooden formwork that was made in sections, I think 4 or 5 feet wide. तो वो शटरिंग लगा के, और क्योंकि आर्च या वॉल्ट एक दफा कंप्लीट हो जाए तो फिर तो स्टेबल है. सो very quickly, I think the second or third day, we dropped the shuttering and moved it along to the next, and then made the next section. And then, so this is a very successful way of making, the time factor was reduced, the cost factor was reduced, and we were all very happy. I wish I had some photographs of that. किसी वक्त शायद दिखाएं आपको. तो उसमें a series of catenary vaults side by side. जो बीच वाले हैं वो तो एक दूसरे को horizontal force balance कर लेते हैं. But at the ends, the last one at the two ends, they have to be designed to reduce that, to take the thrust. So वहां पे फिर हमने buttresses लगाए. All Hashim Khan's design, to have these buttresses, not thick walls, but thin buttresses sloping down. That was fine. The house was made, his farm buildings were made. Then he asked us to do, why don't we do this for the whole village? All the workers, and उनको भी फायदा है वो इसका. मैंने कहा ठीक है तो, but there was no particular, and people were curious कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन nobody wanted a house like that. So वो हमने फिर prototypes, 2 residential units we made. अब उसमें, having so successfully built the farmhouse, we thought कि इसको फिर और improve करते हैं. ये जो शेल है इस पे हम मड फिल करके ऊपर यूजेबल छत बना लेते हैं, और तो इंसुलेशन भी बेहतर हो जाएगा. सो दैट वाज वन इनोवेशन. फिर हमने कहा कि ये बटरसेस क्या शायद ऊपर से लानी थी, वो हमने नहीं करी, इसकी जरूरत नहीं, और वी डिडंट रियलाइज दैट दिस वाज विदाउट कंसल्टिंग हाशिम. सो वो सारा एक्स्ट्रा लोड भी डाल दिया, बटरेसेस भी हटा दी,
और उसके बाद जब शटरिंग ड्रॉप की, द होल थिंग केम डाउन। मैंने आपसे कहा कि हम ये हैड फेलियर्स, unless we had made those failures, we wouldn't have learned many important lessons. फिर we got a big lecture from Hashim Khan, दोनों का दिमाग खराब है, ये उस तरह की लोडिंग नहीं हो सकती वगैरह वगैरह, एंड यू हैव द लाइन इज स्लो सेटिंग, और फिर बटरसेस भी नहीं है तो उसने सारा गिरने था वगैरह वगैरह. And it's another story that we also built a school in the same method. Uh, when we finally made these, और अपने किसी मुलाजिमा को उन्होंने कहा कि आप रहें इसमें देखें, फिर हमने पूछा कुछ दिनों बाद कि भाई कैसा आपको लग रहा है, वो हमारी शक्ल देखने लगी, ये कोई घर बनाने का तरीका नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा ही कहता है हम अपनी मिर्ची किधर सुखाएंगे रूफ के ऊपर, एंड सो हम कहते हैं गर्मियों में रात को छत पे जाके सोते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं छतें, तो ये, और अगर ये इतना ही अच्छा तरीका है तो तुम्हारा घर भी इसी तरह बनाया तुमने. So I felt so ashamed, and so that was another big learning experience, because then we used the same principle. यहाँ पे जमान पार्क में हमारे एक और दोस्त थे, डॉक्टर फरूख, यूरोलॉजिस्ट, कजन ऑफ इमरान खान, तो उनके घर फिर इसी तरह से कटिनरी वॉल्ट्स ने, लव हाउस, आई थिंक इट्स स्टिल स्टैंडिंग एंड इट्स यूज्ड वेरी सक्सेसफुल, दे आर वेरी हैप्पी. हाँ, ये जमान पार्क में है. अब वो तो पहले आपको पता कर, हिज वाइफ फातिमा, यू हैव टू कांटेक्ट हर, ज़ाहिर है. अच्छा, यू नो समबडी recently किसी से who'd gone to visit, इस तरह स्टूडेंट्स और समथिंग, मैंने उनसे पूछा कैसा लगा, कहने लगी वो तो है ही नहीं वहाँ, the land has been sold and the new owners have pulled down the old structures. But I have to look for the and wonderful, I'd like to see those. आपने कब किया था? Oh, अच्छा अच्छा, okay, yes, so very sad to hear that the new owners have this. So, um, so there's a lot yet to be done. A lot is being done. ये तो वो जमाने की बात है, as I said, जो कंप्यूटर भी अपने प्रिमिटिव किस्म के थे, स्लो होते थे. ये हैंडल्ड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नया नया, but it took days for it to calculate every point. और इसी तरह से हमने, I think we were the second architect's office that used computer, and the first was PPAC, and then I got a computer from Hong Kong. That's another interesting story. But so we start. जो computer उस वक्त drafting होती थी, you had to switch it on, feed the paper, और वो pen would go from point to point to point to point. इतना टाइम लगता था कि हम रात को उसको गुड बाय करके चले जाते थे, फिर सुबह आके देखते थे तो उसने ड्राइंग बनाई हुई है, और इस बीच में अगर पावर शट हो गया, the whole night's work is gone, then you start again. So this is what we had to work with, but we kept at it. Now of course it's so much more sophisticated with the new algorithms, the high-speed supercomputers, and the new technology, material technologies. So a lot of very, very amazing work is being done all over the world in research institutions. New forms are now being developed. New materials are also being used. And of course, new techniques, technologies for constructing. This I will talk about next time. कि अभी जो हो रहे हैं
at the cutting edge, especially now with these supercomputers, their capacities, and 3D printing, or it's really amazing what is going on all over the world. ये कहाँ से कहाँ चीज पहुंच गई. But we'll talk about that. It's a very important, obviously, question, because everyone is so excited about these new algorithms and 3D printing और सारा जो उसकी possibilities हैं और efficiencies और speed और ये सारा कुछ, it needs to be seriously discussed, and we'll do that next time. तो अभी के लिए I think that is all. Yes. So if there are any questions, we can. Do you have any questions? Now we're happily making flat domes with filled. Of course, we've learned it's better not to fill it with mud. And the best is कि मसाले के साथ चुनाई करके पहले हम रफ broken brick pieces with lime mix करके sort of lime concrete से भरते थे, उसमें से भी seepage और water absorption के मसले होते थे. So and structurally the best way is कि वो फ्लैट डोम के जो बीच के स्पेसेस हैं उसमें भी प्रॉपर चुनाई विद मसाला वो करें, तो वो स्ट्रक्चरली भी बहुत एडवांटेजेस होता है, स्टेबल होता है, एंड ऑफ कोर्स यू गेट द एडवांटेज ऑफ द थिक mass insulation, etc. Are we doing this all the time? Alhamdulillah. A very strange thing. Again, there's so much we have to still learn. फ्लैट डोम्स वो करना क्या होता है कि एज अ प्रिकॉशन हम पहले तो जो शेल बिफोर फिलिंग अप द गैप्स उस पे वाटर प्रूफिंग कर देते थे, और फिर लेकिन अगर ऊपर नहीं है तो फिर वो पानी सीप करके इफ इट स्टेज तो फिर पिन होल्स भी होंगे उसमें से आने लगते हैं. सो नाउ आफ्टर मेकिंग इट फ्लैट एंड लेवल, देन यू डू अ हॉट बिटुमन layered bituminous felt. That's the best so far as we found. I'm not at all impressed by these new chemical waterproofings, वगैरह. They have a short, I mean, there are problems with a lot of these new technologies. But so इस तरह से flat domes में तो अब तकरीबन कोई शिकायत नहीं होती. Surprisingly, जो spherical domes हैं, which we for that reason they kept without making flat, उसमें अभी तक problems आते हैं. And you would think भाई spherical है, पानी तो उसमें से बह जाएगा. So we tried all kinds of glaze style finish करना, bituminous paint, और वो curve की वजह से फिर वो भी problem होता है. You can't use every material. So that's still work in progress. I haven't actually looked it up. It's very easy, of course, मगर time नहीं मिलता. I think you guys should do it. Like, this is the, it's for the schools, the academia to do this. Look into this, find out कि क्या material दुनिया भर में हो रहा है, publish होते हैं, papers होते हैं, no reason why you can't do this. And if there are still problems, there you are. There's something to develop and research and work with the chemists, work with the engineers. You've got the laboratories, you have the equipment. So why not? एक engineer
was doing a postgraduate uh, master's, I think, or a PhD. His father was a very fine engineer, Niazi Saab, and so as a young graduate, we we um, we could consult his father's firm for engineering things. So he got involved in some project. फिर उसमें, because we were using these domes and arches, वगैरह, he became so interested. He went and did a lot of study on site of the monuments. और फिर then he got so fascinated by this uh, that he decided to do his master's thesis on this, yeah, UET में. So he did that, and now, mashallah, he's a successful engineer. And एक दफा ऐसे हुआ कि बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट था, आई थिंक मे बी IDSP के लिए जब था. So once again the question came up, why don't we use mud domes and things like that? So उसमें the building regulations just wouldn't, they specifically rules out arch because of earthquake, seismic zone, very intense, simply out of the question. हाँ, so हमने कहा ये क्या बात, खैर you couldn't, रूल्स लिखे, अब किस किस को चैलेंज करें, प्रूव करें. सो हमने फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक हमारे दोस्त थे, डॉक्टर नेम, सो ही वाज डूइंग आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे. तो उनसे मैंने कहा कि जी ये एक बिल्डिंग हम कर रहे हैं, वी वांट टू डू इट विद द डोम. कहते हैं कि सिस्मिक अर्थक्वेक में ये तो नहीं खड़ा रहेगा, could you test this out with your laboratories? So he did that. He got one of the students or team, they did the simulation, and he came back and said कि उसमें तो कहीं भी टेंशन नहीं डेवलप हो रहा. No, they nowhere developed tension. So, but anyway, so we have to work on these things. नहीं नहीं, अब तो कंक्रीट में बनाते हैं. हाँ, कंक्रीट में बनाते हैं. It's so strange. बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बुलाया, उनकी कुछ बिल्डिंग्स थी पुरानी, उसको वो कुछ रेनोवेट कराना चाह रहे थे, रिपेयर कराना चाह रहे थे. सो हमने तो वही कहा कि जी आप इसको, एंड फॉर सम रीजन वी सेड कि आप इसको जिप्सम में करें, मे बी लाइम या जिप्सम. तो वो जैसा इट हैपेंड टू बी फाइजीसा, who is now the chief justice, वो उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ थे. तो ही वाज वेरी कीन, इससे हाँ बताएं कैसे करना है. तो हमने कहा बड़ा आसान है, यहाँ का तो बड़ा ट्रेडिशन है, सदियों से कर रहे हैं, तो उसी को पकड़ लेते हैं उस्ताद को. You know, we went around finding nobody knew, at least they wouldn't come forward. तो बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल से हजाराज में कुछ कारीगर मिले. जब उनसे बात की, कहते हैं हम तो वी यूज दिस ऑल द टाइम. सो देन लास्ट आई रिमेम्बर, हालांकि उन्हें टेक्निक भी पता थी और करते भी हैं, some reason they just refused to do this work. I think there's some fear, something, I don't know, it was a problem. Official work, come in the limelight वगैरह. कहते हैं आपकी कम्युनिटी में तो करते हैं. हाँ,
और प्लस जो अफगानिस्तान से आते हैं लोग, और उनमें भी हजारों बहुत से आए, तो वहां भी वही, इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन, दे नो हाउ टू डू इट, बट somehow they were scared of coming out in the public domain. I don't know if it wasn't a sort of new building. It was, but I just gave them my advice and said I didn't follow up. Kya hua? So, but the point is, you have to keep, questioning, experimenting, doing things. The only way to learn, ये कितने ही आप एनालिसिस टेक्स्ट वो डेवलप कर लें, थियोरी कर लें, जब तक एक्चुअल बना के वो लोडिंग करके कोलैप्स नहीं होगा, and you won't get a feel of how these things are built and how they stand up. So, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। खारान में भी पुराना कदीम प्री इस्लामिक ट्रेडिशन चला रहा है। उनके जो फ्यूनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बाकायदा जो चार ताख स्क्वायर विद स्फेरिकल डोम ऑन टॉप, और वो ज़ोरोएस्ट्रियन बेरियल, उसमें बोन्स आर जस्ट केप्ट। तो ये तो सेंचुरीज ओल्ड, बट ग्रेजुअली, जैसे मैंने कहा, अब तो ये मिस्त्री वगैरह सब कंक्रीट शायद। देयर वी आर। तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, खुदा हाफिज। आई थिंक As- स्टॉप शेयरिंग। Assalamu alaikum, Thank you. sir. Thank you, sir. सॉरी, आई डिड आई आस्क, अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। महविश। जी, आप लास्ट टाइम मुझे पूछ रहे थे क्वेश्चन, सॉरी मेरा उस वक्त आई थिंक वॉइस आपको रीच नहीं करी थी। आई वाज हाँ टॉकिंग, you couldn't hear me, there was some हाँ glitch in my computer. हाँ हाँ So I just wanted to let you know कि मैं बहुत I'm like enjoying this class too much, क्योंकि मैंने कभी भी, जब मैं I was back in architecture school, कभी भी इतना स्ट्रक्चर का इन डेप्थ कभी उन्होंने बताया। So whatever you're telling, और फिर उसको मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ after the class, so I'm kind of understanding everything really good. तो आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। आपने पूछा था how's it going so far, I was telling you that. And then थैंक मैं यही सोच रही थी कि जब हम आर्किटेक्चर स्कूल में होते हैं तो आई फील जो भी हम डिजाइन करते हैं दैट्स सो अनरियलिस्टिक एज कम्पेयर टू लाइक व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, कि कभी किसी ने स्ट्रक्चर का इतना इन डेप्थ में पढ़ाया नहीं वहाँ पे, और जब हम रियलिटी में बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं तो दैट इज द मेन लाइक द स्केलेटन ऑफ द बिल्डिंग व्हिच शुड बी फोकस्ड ऑन, लेकिन वो उसकी कभी इतनी नॉलेज ही नहीं मिलती 5 years में पढ़ के भी। So I feel it's very important for schools to like incorporate some part of structure when they're like teaching architecture. So लोगों को पता हो कि अगर बिल्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में बनेगी भी या नहीं बनेगी इस तरह जैसे हम डिजाइन कर रहे होते हैं। So I feel that's like kind of different. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास लेके। I feel it's a good decision. थैंक यू वेरी मच महविश। आप बिल्कुल ठीक। आप कहाँ यू टीचिंग कहाँ पे? नहीं मैं टीच नहीं करी सर। मैं पहले अमेरिका में थी, अभी मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। सो आई विल बी जॉइनिंग यू इन द क्लास सून इंशाल्लाह। ओह, अच्छा जी अच्छा अच्छा। जी जी Okay, जी that's fine. You're welcome. जी But yes, there is, as I keep saying, there is so much work to be done. और हमारे एकेडमिक्स, एकेडेमिया क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं, कोई उन्हें फिक्र ही नहीं है। सर सारे इवन मुल्क। मेरा जो थीसिस वाज लाइक आई डिडंट नो मच ऑफ द स्ट्रक्चर बिकॉज जो कुछ भी था वो थोड़ा बहुत कॉलम बीम्स इतना तक पता था, लेकिन इससे ज्यादा कभी, जैसे आप आर्चेस के बारे में पढ़ाते हैं, कैटेनरी के बारे में, आई वाज लुकिंग इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो लोगों ने एक टर्की में किया हुआ, बी हाइव होम्स थे, वो मैं कल पढ़ रही थी उनके बारे में कि उन्होंने कैटेनरी आर्चेस की बेसिस पे वो बनाए हुए, डिजाइन किए हुए वो लोकल मटेरियल वहाँ पे जो अवेलेबल मटेरियल्स है। So I was studying the structure कि किस तरह से उन्होंने उसको resist किया हुआ without
और बिल्कुल मिनिमल सी उन्होंने चीजें लाइक मटेरियल यूज किया हुआ, और फिर भी उसका इतना मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसको मिली हुई। वो जो बी हाइव फोम्स उन्होंने बनाए हुए वहां पे सैंड से और स्टोन से। सो मैं मुझे तो चीजें कभी पता ही नहीं था। व्हेन बैक इन स्कूल आई नेवर न्यू कि इस तरह से भी डिजाइनिंग होती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वेरी गुड. जी Yes, I hope more more people will start waking up and realizing सीरियसली, what needs to be done. Uh, बिकॉज Good. द वे यू लाइक टेल अबाउट बट्रेसेस एज वेल, तो मैंने नाम सुना था बट्रेसेस का भी, न्यू कि अच्छा फ्लाइंग बट्रेसेस है तो वो सपोर्ट करिए, वो बिल्डिंग को रेनफोर्स करिए, बट उसके अलावा उसके कोई स्ट्रक्चर का पता ही नहीं था कि वो किस तरह से करिए। इट वाज जस्ट लाइक वन टर्म दैट वी न्यू बैक इन स्कूल। सो या Hmm. Good. जी, Uh, तो Anybody थैंक यू else? सो मच। Thank you very much, Mavish.